Good morning, students. We are studying chapter number 8, that is conservation of plants and animals. Today we will discuss with you Red Data book. The IUCN, full form of IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, maintains an international list of animals and plants whose continued existence is getting threatened. This is the definition of Red Data book. So question comes here, what do you mean by the Red Data book? Write down the definition of Red Data book. What is Red Data book? So you can write here. First of all, you write down its full form and then you can write down. It maintains international list of animals and plants whose continued existence is getting threatened. This list is published in form of Red Data book. Species are classified into different categories on the basis of perceived risk to their existence. मीन्स वो वाले एनिमल जो आपके ख़त्म हो गए हैं और जो ख़त्म होने की कगार पे हैं वो रेड डाटा बुक में उनकी कलेक्शन है. अकॉर्डिंगली दे मेक द लिस्ट एंड अरेंज इट इन दिस बुक. ईच रेड डाटा बुक यूजुअली डील्स विद द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स. एग्जाम्पल reptiles, insect, mosses. These books are now being published in different countries and provide useful information on the threat status of the different species. ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में अब ये पब्लिश हो रही है बुक और अलग अलग इंफॉर्मेशन देती हैं उन स्पीशीज की जो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है. ठीक है. When no members of a species exist or is presumed beyond reasonable doubts to have disappeared, such a species is said to be extinct. Okay, underline this. ठीक है कि वो वाली स्पीशीज जो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, उनका कोई भी मेंबर अब नहीं है, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, तो उनको बोलेंगे हम एक्सटिंक्ट. एग्जाम्पल डोडो, passenger pigeons and Caribbean monk seal are the some species that have become extinct, जो आपकी क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है. तो sometime question may be asked in this form. Differentiate between extinct and endangered species. Okay, give some example of extinct. So you can write down the definition of extinct animals and you can also give the example. When a species faces a very high risk of extinction in the near future, it is termed as an endangered species. ठीक है, एक्सटिंक्ट तो आपके ख़त्म हो चुके हैं और एंडेंजर जो ख़त्म होने की ही कगार पर हैं, ख़त्म होने वाले हैं, उसको बोलेंगे हम एंडेंजर्ड स्पीशीज. तो ये दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल एंडेंजर्ड की बात करें, ब्लू व्हेल, जायंट पांडा, स्नो लेपर्ड, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग एंड टाइगर आर सम ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज. ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर ही आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज. तो आपने यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड की, और सेकंड पॉइंट पर आपने एग्जाम्पल लिखना है. एनी टू यू कैन राइट डाउन. आफ्टर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, द वल्नरेबल स्पीशीज. The vulnerable species are those that face a high risk of extinction in the medium term, like cheetah, gaur lion, sloth bear are some of the vulnerable species. ठीक है, तो तीनों एक्सटिंक्ट,
endangered और vulnerable species with example आपको clear होना चाहिए. Okay? After that, very very important, endemic species. Endemic species are unique to a particular geographic location, such as a specified island, some habitat type, a nation, or some other well-defined zone. To be endemic to a place or area means found only in that part of the world and have nowhere else. Means particular region तक defined है, ये confined है particular area तक, उसी particular area में ये मिलते हैं, otherwise they are not found. For example, you can underline orange-breasted sunbird. You can also see the picture. Orange-breasted sunbird is endemic to Fynbos. This implies that it is exclusively found only in Fynbos vegetation type of southwestern South Africa. ये यहीं पर मिलते हैं साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका में, अदरवाइज ये कहीं पर भी नहीं मिलते. मतलब ये इस पर्टिकुलर एरिया तक क्या है, कन्फाइंड है. लायन टेल मसैक, you can also see the picture, lion tail mosaic. It is endemic to a western ghat of southwest India. ये आपको साउथ वेस्ट इंडिया के वेस्टर्न घाट पर ही मिलेंगे और कहीं नहीं. उस वहीं तक ये क्या है, लिमिटेड है. ओके. The extinction of endemic species have many causes. These includes pollution and natural disasters. However, it is human action that is responsible for four main causes of their current rate of extinction. ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं इनके एक्सटेंशन होने के. तो लेट अस डिस्कस some of them. First, a loss of habitat. It occurs when an environment is altered so much that certain organisms can no longer survive there. Habitat loss may occur due to pollution and or destruction of habitats. कि उनके रहने की जगह ही जब खत्म होगी तो where they will live, means they are losing their habitat. Second, overexploitation. Overexploitation occurs when living organisms are hunted to such an extent that their population is not able to maintain itself, even if it is not initially abundant. For example, passenger pigeons, once numerous across North Africa, were hunted for food and are now extinct. ठीक है, जो पैसेंजर पिजन था आपका, उसको फूड के लिए क्या करते थे, हॉन्ट करते थे, और अब क्या हुआ कि वो एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म ही हो गया. तो मीन्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, उसका यूज़ कर लेना. फिर इंट्रोड्यूस स्पीशीज. Colonization, that is introduction of new species, can have a significant impact on endemic species. This is because the new species may prey on or compete for resources with the existing species. तो introduced species जो है वो भी आपका क्या है, कारण है इनकी exploitation का ख़त्म होने का. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ecosystem disruption. The living organisms and ecosystem are often linked together. This link might be a food chain, the pollution of plants by the insects, the pollination of plants by the insects, bats and birds, or the shelter that plants provide for certain animals. Because of these links, the reduction in the population of one species can affect the population of other species. ठीक है.
कि आपका इकोसिस्टम क्या है, डिस्टर्ब हो रहा है. एक भी फूड चेन से मिस हुआ कोई भी एलिमेंट तो बाकी की चेन क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाती है. The projects and programs concerning nature and started by the Indian government includes Indian Project Tiger, Nature Project Tiger आपका इंट्रोड्यूस किया गया. Nature camps and jungle lodges. These have been organized to promote wildlife awareness among people. These projects not only help in preserving our natural heritage but also encourage our eco-tourism. So these programs have been launched by the government to maintain their number. So this is all about today. Thank you and have a nice day.